Hello everyone, this is part 3 of chapter 7, that is the Vijayanagara Empire, and the first topic is the Sacred Center. अब सेक्रेड सेंटर वॉज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ऑफ द विजयनगर एम्पायर. इस रीजन को एक सेक्रेड रीजन इसलिए माना जाता है बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रेडिशंस विच आर अटैच्ड टू दिस रीजन और विच आर एसोसिएटेड विद दिस रीजन. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ बिलीव्ड दैट द हिल्स ऑफ दिस रीजन sheltered the kingdoms of Bali and Sugriv, which were important monkey kingdoms which are mentioned in the Ramayana. देन एक ट्रेडिशन ये भी है दैट पंपा देवी हु इज़ द लोकल गॉडेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया विच इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ गॉडेस पार्वती. शी डिड पेनेंस, दैट इज़ तपस्या, इन दीज हिल्स इन ऑर्डर टू मैरी वीरूपक्ष विच इज़ द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिव. Then there are a lot of Jain temples of the pre-Vijayanagara period which are situated in this place. तो बिकॉज ऑफ रीजन्स लाइक दीज ये जो जगह है इसे कंसिडर किया जाता है एक सेक्रेड प्लेस. And this is probably one of the reasons why the Vijayanagara kings chose this place as their capital. So the Vijayanagara kings, they claimed to rule on the behalf of Lord Virupaksha. They tried to get legitimacy or seek legitimacy from the divine. अब इसके कुछ examples हैं. First, that the royal orders, they were signed as Shri Virupaksha. Then the kings used to adopt titles like the Hindu Surtran. तो सुर का मतलब होता है गॉड और देव एज अपोज टू असुर, एंड त्राण का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड. तो विजयनगर के किंग्स अपने आप को हिंदू राय सुर त्राण कहते थे, जिसका मतलब है द सुर त्राण्स ऑफ हिंदू राइज, दैट इज़ हिंदू किंग्स के भी सुल्तान. Also, the use of the term Sultan indicates that the Vijayanagara Empire also had close links or relations with the other empires. That is, it also indicated Islamic influence. We know that association with the divine was one of the important aspects of the Vijayanagara Empire. Not only the Vijayanagara kings, but उससे पहले भी जो kingdoms रहे हैं, for example those of Pallavs, Cholas, Cholukyas etc., वो भी अपने आप को divine के साथ associate करते थे. One way by which this was done was by encouraging this practice of temple building. Temple building say they used to seek legitimacy from the divine, that is, they used to seek moral authority over their subjects. The kings used to give devdans, that is, वो land grants देते थे for the construction of these temples, and also used to provide other resources. Then temples were usually the center of activities, that is, they were a hub of cultural and religious activities. Then temples एक बहुत important role play करते थे in the rural development. For example, जो temples के पास funds होते थे वो उनसे irrigation works, reclamation of waste lands, एक्सटेंशन ऑफ कल्टिवेशन, इन सब को भी सपोर्ट करते थे, इन सब को भी फंड करते थे. देन टेम्पल्स वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, दैट इज़ ऑलमोस्ट 12% to 30% जो रूरल क्रेडिट होता था वो टेम्पल्स से आता था. तो इन सब से वी सी दैट टेम्पल्स वर नॉट ओनली रिलीजियस और कल्चरल सेंटर्स बट वर ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक सेंटर्स. अब नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर and discuss about two important temples, that is Virupaksha temple and the Vitthal temple. So up with respect to the architectural styles, first of all there was influence of Islamic cultures. तो इंडो इस्लामिक एलिमेंट्स थे कुछ आर्किटेक्चर के, फॉर एग्जाम्पल गेटवेज, डोम्स, आर्क्स एट्सेट्रा. So this indicates possible intermingling of cultures. Then with respect to the Dravidian style, which is particular to southern India, there were gopurams, which were basically royal gateways या entrance to the temple, and ये entrance काफ़ी ज़्यादा huge होती थी ताकि दूर से ही पता लग जाए that अंदर जाके there is a temple. Then other features include mandaps or pavilions, long pillared corridors, गर्भगृह, दैट इज़ जो प्रिंसिपल डीटी का रूम होता था, स्कल्पचर्स एंड चैरियट स्ट्रीट्स. चैरियट स्ट्रीट्स बेसिकली एक्सटेंड करती थी फ्रॉम द रॉयल गेटवेज टू द टेम्पल्स. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द टेम्पल एंड दिस इज़ द रॉयल गेटवे, दैट इज़ गोपुराम. तो द चैरियट स्ट्रीट्स यूज टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड गो अप टिल द टेम्पल इन स्ट्रेट लाइन्स, एंड इन चैरियट स्ट्रीट्स के साइड्स पे देयर यूज टू बी मर्चेंट शॉप्स.
Right. So if you've seen some historical drama or a historical film, you will be able to imagine what these chariot streets used to look like. There are two important temples. First is the Virupaksha temple, second is the Vitthal temple. So Virupaksha, as I've already mentioned, was a form of Lord Shiv. So this was the temple dedicated to the worship of Lord Shiv. Historians suggest करते हैं that the earliest shrines of this temple, they are dated to the 9th and the 10th centuries, and ये shrines enlarge की गई थी by Vijayanagar kings. पर्टिकुलरली कृष्णदेव राय ने इसका ईस्टर्न गोपुराम, दैट इज़ ईस्टर्न रॉयल गेटवे, बनवाया था. देन देर वर सेवरल हॉल्स इन द टेम्पल विच वर यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पजेज. देन विट्ठल टेम्पल के जो प्रिंसिपल डीटी हैं दैट इज़ लॉर्ड विष्णु, बिकॉज विट्ठल इज़ द फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु. अब वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो विट्ठल हैं उनकी पूजा स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में की जाती है. So presence of such a temple in the Vijayanagara Empire, which particularly pertains to Karnataka, shows that there was intermingling of cultures and traditions. Now let's move on to the next topic, which is plotting palaces, temples and bazaars. तो अब देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज जिससे हमें विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ लॉट ऑफ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स. देन हमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल रिमेन्स मिले हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, स्टोन स्ट्रक्चर्स एट्सेट्रा. देन इंस्क्रिप्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स. Then we have popular and oral traditions. We even have accounts of foreign travelers like Ibn Battuta, Niccolo di Conti, etc. इन सब की हमने ब्रीफ डिस्कशन तब भी करी थी when we studied about Hampi in the first video. Then there are a lot of literary sources which are written in Telugu, Kannada, Tamil, Sanskrit, etc. As already discussed in the first video, जो initial surveys conduct किए गए थे वो किए गए थे by Colonel Mackenzie. And one important technique which they used was mapping. तो अब mapping में क्या होता था, जो भी एम्पायर का एक्सटेंट था उसको काफ़ी ज़्यादा पोर्शंस में डिवाइड कर दिया जाता था. फॉर एग्जांपल एम्पायर के टोटल 25 पोर्शंस कर दिए गए थे, एंड देन एक पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर भी काफ़ी सारे पोर्शंस बना दिए गए थे. इस तरह से एक पर्टिकुलर एरिया की एक्सटेंसिव, इलैबोरेट एंड डिटेल्ड स्टडी की गई है. So because of techniques like these, we've been able to get a lot of information about the Vijayanagara Empire. Then the Archaeological Survey of India and the Karnataka Department of Archaeology and Museums have preserved the site of Hampi. So I'm just mentioning the pointers which I've written because ये सब हम already discuss कर चुके हैं जब हमने हम्पी के बारे में पढ़ा था in the first video. Then the last point which we have is that 1980s में there was this project which was undertaken जिसमें the material remains of the empire were documented. So there were extensive techniques which were used in order to understand or to discover the material remains of the empire as well as to document them. So because of techniques like these and because of all these material and literary sources, we have very rich information about the Vijayanagara Empire. So throughout the chapter हमने देखा about the politics of the Vijayanagara Empire. Then हमने देखा कि what were the military strategies which were adopted by the empire, by the kings. We also looked at the various architectural styles which were incorporated in the buildings of the empire. Also, we saw that there were influences of other empires, of other traditions on the Vijayanagara Empire as well. However, एक चीज़ जो lacking है इसमें वो ये है that we do not have enough information about the ordinary people, about the lives of ordinary people. जैसा हमने urban core में भी पढ़ा था that there is very little evidence to reconstruct how the ordinary houses were built. So that is one aspect जिसके ऊपर हमारे पास ज़्यादा information नहीं है. So by studying all these sources together, for example the literary sources, the material remains, the accounts of foreign travelers, etc., historians, they are trying to reconstruct the lives of ordinary people as well. They are looking further to answer questions like what were the significance of the rituals which were performed, etc. So that is all for this chapter. Thank you so much for watching.